Hello everyone, welcome to my channel HSV Harman Study Vlog. Today we discuss some important MCQ of Clinical Biochemistry Part 4. So let's start. First question is which method used for bilirubin estimation? हम bilirubin के estimation के लिए किस method को use करते हैं? Option A is Molay and Avlian method, B dam method, C biuret method, D heat method. So the answer is option A, Malay and Avlian method. Second question is which enzyme is secreted by liver? ऐसा कौन सा enzyme है जो secrete होता है by liver? Option A is protease, B transaminase, C lipase, D amylase. So the answer is option B. Transaminase enzyme is secreted by liver. Third question is AST important enzyme to detect abnormality in. AST important enzyme है वो किसकी abnormality को detect करता है. So first AST stands for aspartate transaminase और also known as SGOT, serum glutamate oxaloacetate transaminase. सो ये किसकी abnormality को डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए इज लीवर डिजीज, बी लंग डिजीज, सी ब्रेन डिजीज, डी नन ऑफ दिस. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, लीवर डिजीज. फोर्थ क्वेश्चन इज HDL इज मेनली सिक्रेटेड बाय द. सो HDL मेनली किसके थ्रू स्क्रीट होता है? सो फर्स्ट HDL स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो option A is liver, B small intestine, C large intestine, D both A and B. So the answer is option D, both A and B. HDL is mainly secreted by the liver and small intestine. Fifth question is jaundice is caused by elevated level of. jaundice किसके elevated level से cause होता है? Option A is bile salt, B bile pigment, C both A and B, D none of these. So the answer is option B, bile pigment के elevated level से jaundice cause होता है. Sixth question is ALP level is generally increased in. ALP level किस condition में increase होता है? So first ALP stands for alkaline phosphate. Option A is kidney disease, B liver disease, C myocardial infarction, D obstructive jaundice. So the answer is option D, obstructive jaundice. Seventh question is which changes seen in jaundice? जब किसी को पेशेंट को jaundice हो जाता है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए इज येलो कलर ऑफ स्किन एंड आई, बी इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. उसकी स्किन और आई का जो कलर है वो येलो हो जाता है और आल्सो उसका जो बिलिरुबिन लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. Eighth question is serum glutamate pyrate transaminase is also known as. So serum glutamate pyrate transaminase is SGPT. तो इसको हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ALT, B AST, C HDL, D LDL. So the answer is option A, ALT. ALT is alanine transaminase. Ninth question is bilirubin is a breakdown product of. Option A red blood cell, B white blood cell, C platelets, D none of these. So the answer is option A, red blood cell. Bilirubin is a breakdown product of red blood cell. 10th question is serum urea and creatinine determination is done for ovulation of. So जो यूरिया और क्रिएटिन की determination करते हैं वो हम किसकी ovulation करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए इज किडनी, बी लीवर, सी लंग, डी हार्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, हम किडनी की एवोल्यूशन करने के लिए यूरिया एंड क्रिएटिनिन की डिटर्मिनेशन करते हैं. 11th क्वेश्चन इज ALP स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए इज एल्कलाइन प्रोटीन, बी एल्कलाइन पाउडर, सी एल्कलाइन फॉस्फेट, डी एल्कलाइन पिक्रेट. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, एल्कलाइन फॉस्फेट. 12th क्वेश्चन इज पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज आल्सो कॉल्ड. तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस को हम क्या कहते हैं? और
Option A is hemolytic jaundice, B. hepatic jaundice, C. prehepatic jaundice, D. obstructive jaundice. So the answer is option D. Obstructive jaundice. Post-hepatic jaundice is also called obstructive jaundice. 13th question is normal value of serum calcium is. Serum calcium की normal value क्या है? Option A is 5.7 to 11.5 mmol per liter, B 12.5 to 15.5 mmol per liter, C 8.7 to 10.5 mmol per liter, D 3.5 to 7.5 mmol per liter. So the answer is option C. 8.7 to 10.5 mmol per liter is a normal value of serum calcium estimation. 14th question is SGOT stands for. Option A serum glutamic oxaloacetic transaminase, B serum growth oxaloacetic transaminase, C serum glutamic thyroid transaminase, D serum gel oxaloacetic transaminase. So the answer is option A, serum glutamic oxaloacetic transaminase. 15th question is OCPC test for. Option A is calcium, B phosphorus, C sodium, D potassium. So OCPC test है वो किसकी एवोल्यूशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. So the answer is option A calcium. So OCPC test किसका होता है? कैल्शियम का. So these are the 15th important MCQ of clinical biochemistry. Please like, share, comment on my channel. Please subscribe my channel if you like my videos. Thanks for watching.